Okay, so in the last class we discussed about pipelining concepts. Okay, so how actually the pipelining, how it looks. Okay, so these are the instructions. Instructions are one, second instruction, third instruction. I hope my contents are visible. Okay, this is with respect to cycle. Cycle 1 means clock cycle, cycle 3, cycle 4, cycle 5. So it is a 5-stage pipeline. Like one instruction, it is passing through instruction fetch, instruction decode, and read register, then execution unit, then data memory, that is one stage, and write result. So there are five stages are there. Means one instruction will pass through five stages. Okay, it is passing through the five stages, right? So that's why at the for first instruction it is taking 5 cycle. Then for after every one cycle, like in clock cycle 6, the second instruction is executed. In clock cycle 7, third instruction is executed. Okay, so here overlapped operation, and we represent here in this way. We represent uh, the 5-stage pipeline. Okay, the 5-stage pipeline. So based upon this, we'll see the data hazard and all. Okay, uh, like the data hazard. So due to the non-availability of the data. Okay, due to the non-availability of data. Okay, so this data hazard. So this data hazard arises out of the change of relative timing of instructions. Okay, by overlapping their execution. Okay, uh, like the dependency, for example, you can see here there is a first instruction, that is add instruction. So here it performs I'll write a command, like it performs the content addition of R2 and R3 register. Okay, and store the result in R1 R1 register. Okay, R3 and R2, it add the content of R3 and content of R2. Okay, and it store the result in R1 register. Okay, so here this particular register, R1 register, okay, here we will get a result, right? And the second instruction, you can observe here, the second instruction, that is subtraction. The second instruction, that is it takes it takes content of R1 plus R5, and it stored the result in R4 register. So here you can observe one thing, the content of R1 and content of R5. So here R1 is a source here. So the second instruction, it is depend upon the first instruction. क्योंकि यहाँ क्या होता है, if we get the R1 value, okay, then only means R1 means after completion of the first instruction, after the execution of the first instruction, we will get a R1 value. Okay, so that particular value we are using as input to the second instruction. Suppose here, like R1, suppose here if we consider R3 is equal to 3 and R2 is equal to 2, and initially R1 register contains some value like 10 initial. Okay, now R3 and R2 how much? 2 and 3. So after execution of this instruction, we'll get R1 as 5. Okay, the R1 contain the 5. Okay, so this 5, okay, the R1 register contain the value 5, that is the original value. Okay,
suppose if the instruction is not executed, if the instruction is, if it won't execute within that particular time, okay, तो क्या होता है, the R1 will take the previous value कितना है 10 है, but actually correct value कितना है 5 है. There is a data dependency is there, okay, because because of this dependency, okay, if you want the correct value, then it creates some delay or stall it occurs, okay, stall or delay, okay, there is some delay or stall occurs, R1 and R5, okay. Suppose if there is no stall, then it takes the old value, because like in the data hazard, see here, the first instruction, that add instruction is there, no, so add instruction will come here, okay. तो उसका एक्चुअली क्या होता है, उसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द 5th क्लॉक साइकिल, उसका रिजल्ट मिलता है यहाँ 5th क्लॉक साइकिल में, ओके, यहाँ एट द एंड ऑफ द 5th क्लॉक साइकिल विल गेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. बट सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज सब्सट्रैक्शन, ओके, इन सब्सट्रैक्शन कौन सा वैल्यू, R1 एंड R5, ओके, यहाँ हमको R1 यहाँ मिल रहा है, R1 रजिस्टर, इसका रिजल्ट एडिशन का, ओके. So in subtraction it depend upon the R1 and R4, okay, second instruction क्या है, R1 and R5. तो R1 we are getting at the 5th clock cycle, R5 तो मिल जाएगा. एक्चुअली यहाँ डिकोडिंग स्टेज में ये होता है, लाइक एनालाइजिंग द रजिस्टर्स, ओके, डिकोडिंग क्या करना है, लाइक सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एंड fetching the operand value, source operand, destination operand. तो यहाँ R1 वैल्यू नहीं मिल रहा है, मीन्स यू विल गेट R1 वैल्यू बट इट इज ए ओल्ड वैल्यू, बट हमको कौन सा चाहिए, अपडेटेड, ओके. सो हियर बिकॉज देयर इज अ डिपेंडेंसी इज देयर, यहाँ देखो, यहाँ क्लॉक साइकिल 3 के टाइम पे, ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल 3 इट इज डिकोडिंग द R1 register content. So but here the main thing is, while decoding it should get the updated value, otherwise you will get a wrong result, okay. तो यहाँ क्या होता है, डिले होता है because of dependency, because we are using this pipelined approach, okay, we are using the pipelined approach तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमको ओल्ड वैल्यू आता है यहाँ, so that's why, okay, we are getting a old value and it creates a delay, okay. And here you can see one more thing, like in the third instruction also you can see here, third instruction क्या है, and logical and operation. What is that, content of R1, content of R7 register, और इसका दोनों का ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल एंड, ओके, लॉजिकल एंड ऑपरेशन. तो ये जो लॉजिकल एंड होता है दैट स्टोर द रिजल्ट इन R6 रजिस्टर, ओके, R6 रजिस्टर, okay. So it store the result in R6 register, but here also there is a dependency, means this instruction also depend upon the first instruction result, but यहाँ third instruction है ना, and ये जो है and operation, तो यहाँ इसको क्या कब यहाँ चाहिए, यहाँ, okay, decoding, in the decoding here and R1 का register चाहिए ना, कहाँ, clock cycle 4, but actually R1 value we are getting in the clock cycle 5, we are getting in the clock cycle 5, okay. I will explain once again.
मीन्स द डेटा डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ क्या होता है, ऐड इंस्ट्रक्शन है। ओके, ऐड इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट कहाँ मिलता है आपको, मीन्स वट एवर द रिजल्ट। ओके, लाइक R1 का रिजल्ट, R1 का जो वैल्यू एट द एंड ऑफ द फिफ्थ क्लॉक पल्स, फिफ्थ क्लॉक पल्स के बाद मिलता है हमको, क्योंकि one instruction execution will, this first instruction execution completes after the fifth clock cycle. Okay, but the main thing is here, second instruction, this is first instruction, और ये जो second instruction है और third instruction, ये दोनों क्या है, it is depend upon the first instruction, क्योंकि ये दोनों में क्या चाहिए, R1 का वैल्यू चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। here the subtraction, okay, R4 R1 R5, तो R1 का वैल्यू चाहिए और इसको भी R1 का वैल्यू चाहिए, बट ये इट इज डिपेंड अपॉन द this particular first instruction, it is depend upon the first instruction. Okay, so here actually ये जो है डिकोडिंग स्टेज, ये डिकोडिंग स्टेज में ना इट विल फाइंड सेकेंड स्टेज क्या है, दैट इज इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन डिकोड and it reads the operands, read operands like source operand, destination operand and all। तो ये कहाँ क्लॉक साइकिल 3 इसमें करता है। ओके, बिकॉज वी आर पाइपलाइनिंग, ओवरलैप्ड ऑपरेशन इज देयर, and instruction also here it is decoding during the clock cycle 4, but the data is not available। डेटा कब आता है, फिफ्थ क्लॉक साइकिल के बाद। ओके, सो there is a, because of this data dependency, delay occurs। okay, or okay, or operation R1 and R9, okay, logical OR, so here also the fourth instruction also depend upon the first instruction। yeah, fourth instruction means OR instruction। okay, fourth instruction it is also depend on the, but इसको कहाँ मिलता है, यहाँ। so इसको कुछ delay, it won't, here this or instruction is there, no, it is getting the value of R1। yeah, तो यहाँ क्या था, इंस्ट्रक्शन फेच और यहाँ इंस्ट्रक्शन डिकोड। ओके, सो हियर दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट, क्योंकि सपोज यहाँ रहा तो मिल जाता था क्लॉक साइकिल 6 में। ओके, सो एट द एंड ऑफ क्लॉक साइकिल 5 इट विल गेट। ओके, बट ये जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है एक्सॉर के लिए, हियर ऑल्सो इट इज डिपेंड R1, तो एक्सआर को ना इट वोंट क्रिएट एनी डिले। ये एक्सआर इंस्ट्रक्शन है फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द R1, बट यहाँ इंस्ट्रक्शन फेच होता है और इंस्ट्रक्शन डिकोड, तो इसको मिल जाएगा ये डेटा, ये जो R1 का वैल्यू है ना, करेक्ट डेटा इसको मिल जाएगा, क्योंकि देर इज नो डिले, है ना। यहाँ जो है ये R1 जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो है ना, तो इसको मिल जाएगा क्यों, क्लॉक साइकिल 6 के टाइम पे, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, राइट। बट ये इन तीनों को थोड़ा डिले हो जाएगा। ओके, I2 I3 I4 को, क्योंकि ये जो R1 का रिजल्ट जो मिल रहा है वो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ क्लॉक साइकिल। ओके, बट ये जो है एक्सऑर इंस्ट्रक्शन जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन था, इसको मिल जाएगा, क्योंकि इट इज डिकोडिंग एट द दिस स्टेज, बट ये तीनों में डिले आता है थोड़ा। ओके, मीन्स delay means that's why it will affect to the throughput cycle, throughput performance।
क्योंकि आपको ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके ही जाना पड़ेगा आपको, सेकंड इंस्ट्रक्शन, third instruction, okay, fourth instruction, okay. So it will affect the throughput performance of the pipeline instruction execution, okay. So here the fifth instruction, okay, here also it depend upon the R1. So here you can see here the same thing whatever just now we discussed, okay. Here one more thing I forgot to tell you, like uh, the you can observe here clock cycle 2, clock cycle 5. So this architecture is designed in such a way that this particular clock cycle 2, like instruction memory stage, data memory stage, okay. So here what happens, no, here it performs with respect to clock, like in half of the clock pulse it performs the read operation, then write operation, like here also ये जो है ना green color and here it is represented, no, like with respect to clock pulse, okay. Like here what happens, no, for half of the cycle it performs some read operation, then in the remaining half write operation, read and write operation, okay. So यहाँ क्या हो जाता है, as I told, here you can see a red color is there, no, like for the same first instruction add instruction is there, same diagram, second instruction subtraction, third instruction is AND instruction, fourth instruction is OR instruction, fifth instruction is XOR, okay. So here you can observe here R1, R2, R3, R1, R2 and R3. So this R1 value it is depend upon the, means second instruction depend upon the first instruction, okay. तो ये जो है सेकंड इंस्ट्रक्शन एक्चुअली जो R1 का वैल्यू मिलता है यहाँ एट द एंड ऑफ द क्लॉक साइकिल 5, so that's why here not getting the data, okay. मीन्स क्लॉक साइकिल 3 में चाहिए डेटा बट नहीं मिल रहा है. थर्ड इंस्ट्रक्शन है एंड इंस्ट्रक्शन, सो हियर आल्सो द वैल्यू ऑफ R1 डिपेंड अपॉन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. सो इसको जो डेटा कब चाहिए, ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल 4, बट डेटा नहीं मिल रहा है. बट फॉर दिस इंस्ट्रक्शन, नो, और इंस्ट्रक्शन, ओके, एक्चुअली यहाँ क्या होता है, ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, ओके, द सर्क्यूट इज लाइक दिस, ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल इट परफॉर्म्स द राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन, ओके. तो ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल यहाँ इसको यहाँ ये जो ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ओके, इसको यहाँ डेटा मिल जाता है यहाँ, ये जो ये क्लॉक साइकिल हाफ साइकिल इज देयर, नो. तो क्या होता है, तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल यहाँ डेटा अवेलेबल रहता है. सो हियर दिस पर्टिकुलर फोर्थ इंस्ट्रक्शन, नो, फोर्थ इंस्ट्रक्शन it will get the data, okay. मीन्स पहला हाफ साइकिल में सपोज इफ देयर इज अ क्लॉक पल्स, तो यहाँ क्या होता है, राइट ऑपरेशन मीन्स इट इज राइटिंग द डेटा फ्रॉम this particular stage to this particular stage, okay. And during the next half cycle it performs the read operation, okay. Means the circuit is designed in such a way, okay. So यहाँ डेटा मिल जाता है यहाँ किसको, इंस्ट्रक्शन 4. Then in the instruction 5, so for this there is no problem, so here it will get like in the decoding instruction stage, okay, in the decoding that R1 value is getting. So the hazard will come for the first and second and third instruction only, will get a hazard, okay. For others there is no hazard. Here the delay will occur second and third instruction. So just keep in mind, so whatever the circuit is designed here, यहाँ जो सर्क्यूट डिजाइन किया है, okay, the same diagram is there, okay. Whatever the circuit is designed, no,
it performs with respect to clock ऐसे यहाँ आधा राइट ऑपरेशन होता है और नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल रीड ऑपरेशन विल परफॉर्म read and write. Okay, so that's why this OR instruction will get the data, and XOR also. For XOR there is no problem. Means here in the clock cycle 5 only you can observe here. Clock cycle 5 में क्या हो रहा है? Okay, clock cycle 5 में क्या हो रहा है? It is writing the data to this register. Data भी write कर रहा है और at the same time it is reading the data, means ये इसको भी data मिल रहा है, means write and read operation, write and read operation. Okay, so the data dependency, if the two instructions are the two instructions are parallel, so they can execute simultaneously in the pipeline of arbitrary length without causing any stalls. Okay, assuming that pipeline has sufficient resources. But if the two instructions are dependent, so in our case, just in the example, the two instructions are dependent. Not only two, there are the first instruction, second, third, fourth, fifth. All the four instructions are depend on first instruction. Okay, on R1 value. Second, third, fourth, and fifth, all the four instructions. Four instructions depend on first instruction. Okay, four instructions depend upon the first instruction. Okay, so there are three different type of data dependencies. Okay, data dependency में कितने हैं? In data dependency there are two. In data dependency only there are three types are there. What are there? Data dependency, name dependency, and control dependency. Okay, data, control, and name dependency. So what is data dependency? So the data dependency means the instruction J, see here, this is our example. This is the first instruction, instruction I, second instruction J. Okay, so the instruction J is data dependent on instruction I. Okay, the instruction J is data dependent on instruction I if either of the following holds. Okay, the instruction I that produces a result that may be used by the instruction J. Okay, actually here this is a different type of processor instruction. Whatever the here load instruction is there, and here it is a add instruction, add dot D. It is a different processor instruction. Okay, different processor instruction. So instruction I that produces a result that may be used by the instruction J. Ith instruction is loading the data into the F0. The jth instruction use the F0 as one of the operand. Hence J instruction is data dependent on the ith instruction. तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो लोड इंस्ट्रक्शन है, लोड इंस्ट्रक्शन इट इज लोडिंग द डेटा टू F0 रजिस्टर, और ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन है इट इज टेकिंग द डेटा फ्रॉम द F0, डेटा फ्रॉम F0 रजिस्टर. ओके, तो like there is a data dependency. The instructions are different. Here
this is a different type of process. That's why we represent L dot D, add dot D. Okay, in earlier case, the instruction was different, like add R1 comma R2 comma R3. So okay, this is different type of processor. So here it's a double add and double subtract the instruction. Okay, here R2 R3 store the result in R1, and this is dependent. Okay, because subtraction, it requires R1 value, R5 value, and it stores in R4. तो यहाँ क्या होता है R2 प्लस R3, और वो रिजल्ट कहाँ स्टोर कर रहा है R1 में. तो ये डिपेंडेंट है, इसको चाहिए, ये वैल्यू चाहिए R1 को. Okay, then instruction J is data dependent on instruction. Suppose it is I instruction J and K. Okay, here also it is dependency there. Okay, the name dependency occurs when two instructions use the same register or memory location. Okay, same memory or same register. If they use same register or same memory location, same register or same memory location, but there is no flow of data between the instructions associated with that. ऐसा कोई नाम सेम रहा तो okay, so that is the name dependency. So anti-dependency between instruction I and J that occurs when instruction J that writes a register or a memory location that instruction I reads. यहाँ क्या हो जाता है, like suppose this is the I instruction, this is the J instruction. Okay, एंटी डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी एंड उसका ऑपोजिट एंटी डिपेंडेंसी. यहाँ इंस्ट्रक्शन J, okay, here depend this between the instruction I and instruction J occurs when this instruction J it writes a register or a memory location that instruction I reads. Means इसके पहले, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के पहले सेकेंड इंस्ट्रक्शन ने डेटा मीन्स एग्जीक्यूशन कर दिया तो ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर इट इज लोडिंग द डेटा ऑफ एफ नॉट में लोड कर रहा है एल डॉट डी एफ नॉट कमा R1 रजिस्टर. ओके, तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज परफॉर्मिंग द ऐड ऑपरेशन R1 and R3 store the result in R1. Okay, just one. So here what I must know, यहाँ क्या होता है, it is loading the F0 register. F0 में लोड करता है कंटेंट ऑफ R1 रजिस्टर. R1 रजिस्टर का कंटेंट उसमें लोड करता है. ओके, बट यहाँ क्या हो रहा है, ये R1 एंड R3 एडिशन करता है और उसका जो रिजल्ट है अगेन स्टोर इट इन R1 ओनली. ओके, सपोज यहाँ क्या होता है, अभी सपोज ये जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है J इंस्ट्रक्शन, तो ये पहला एग्जीक्यूट हो गया. ओके, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये R1 का वैल्यू चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है. यहाँ मीन्स इट इज टेकिंग सम टाइम बिकॉज लोड मीन्स इट इज टेक्स मोर टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन. लोड इंस्ट्रक्शन इज देयर, नो, इट इज टेकिंग more cycles to execute the instruction because it has to find the address of instruction. Okay, मीन्स कहाँ से मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है, कहाँ लोड करना है एंड ऑल, बिकॉज लोड स्टोर एड्रेस दिस कॉल दिस टेक मोर क्लॉक साइकिल. तो इसके पहले सपोज ये एग्जीक्यूट हो गया, आई के पहले सपोज जे एग्जीक्यूट हो गया, तो क्या हो जाता है, R1 का वैल्यू चेंज हो जाता है. सो दैट इज एंटी डिपेंडेंसी.
ओके एक्चुअली कैसा है, पहला आई होना चाहिए, उसके बाद ही एक जे होना चाहिए, देन विल गेट करेक्ट रिजल्ट. Then output dependency. Okay, here both output dependence occur when instruction I and J they write to the same register. Okay, ये देखो F not F2 writing to F4, F3 and F5 writing to F4. Both are using F4 register to store the data. Likewise, some data dependency will occur. Okay, so I will upload these content. These PPTs are not uploaded. Okay, I will upload it, so you can just go through that, and we'll discuss in the next class the data, what type of data hazards will occur, and how to overcome that. We'll discuss in the tomorrow class.